बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सा सैद और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो टीचिंग मेथड्स के MCQs हैं जो कि हमारे पास FPSC लेक्चर की पोस्ट के लिए और एजुकेटर्स SC और SC और टीचर्स की जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दैट डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल, कि वो कौन सी क्वालिटी होती है जो कि टीचर के लिए प्राइमरी लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईगरनेस टू टीच हमारे पास ऑप्शन है। तो क्या ईगरनेस टू टीच, देखिए स्टार्ट में वैसे सबके अंदर होता है पेशेंस एंड परसिवियरेंस, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स भी दो तो ज़रूरी है, नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास है पेशेंस एंड परसिवियरेंस, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास पेशेंस एंड परसिवियरेंस का होना ज़रूरी है। अ साइकोलॉजिस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वुड डैश, साइकोलॉजिस्ट जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हुए क्या करेगा, देखिए वो ऑब्जर्व करेगा बिहेवियर एज इट हैपन्स आउटसाइड द लेबोरेटरी और क्लिनिक। A teacher believes that one group of children is very bright and that a second is below average in ability. Actually, the groups are identical, but the first group progresses more rapidly than the second. This demonstrates, यानी ये किस चीज़ को demonstrate करता है? This demonstrates the self-fulfilling prophecy. Dash is a sign of motivated learning. Questioning by students is a sign of motivated learning. कि जब आप टीच करते हो और स्टूडेंट्स आप से जो है इनकरेज होते हैं और मोटिवेट होते हैं तो वो आपसे सवाल भी पूछते हैं, उनके माइंड में जो क्वेरीज होती हैं वो उसे क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। रिसर्च फाइंडिंग्स जस्ट दैट One of the ways effective teachers can increase learning time and, more importantly, student engagement during learning is to ensure that assignments are interesting, worthwhile, and easy enough to be completed by each learner at his or her current level of understanding. Number 6 है हमारे पास dash is least likely to promote achievement among students of lower socio-economic status. That is, frequent correction of wrong answers is least likely to promote achievement among students of lower socio-economic status. नंबर 7 है हमारे पास टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट राइट आंसर है हमारे पास सी, वन शुड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक बाउंड्रीज। डिसलेक्सिया इज़ आ डैश। डिसलेक्सिया बेसिकली क्या है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है जो कि साइकोलिंग्विस्टिक्स में ये टर्म दी जाती है। Parents should play a dash role in the learning process of young children. Parents should play a proactive role in the learning process of young children. The student dash does not manifest a sign of an intelligent young child. The student who has the ability to cram long essays very quickly does not manifest a sign of an इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रैम नहीं करना चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। The child's cognitive development is defined in the best way that is school and classroom environment. In the field of education, the term curriculum refers to curriculum जो है वो रेफर करता है overall program of the school which students experience on a day-to-day basis. Development is a never-ending process. This idea is associated with development जो है वो एक कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है। ये आइडिया किसने दिया था, किस प्रिंसिपल से ये एसोसिएट करता है, तो ये एसोसिएट करता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज ऑगमेंटेड बाय दिस थ्योरी वाज ऑगमेंटेड बाय गेस्टाल्ट थेरिस्ट्स। अ टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू सिट ऑल ओवर द क्लास. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. The best way to handle the situation is that the parents को क्या करना चाहिए? Parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher. Children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to dash. This statement is attributed to Piaget. Dash is not related to the socio-psychological needs of the child. Regular elimination of waste products from the body is not related to the socio-psychological needs of the child.
All of the following statements can be considered as a feature of the process of learning except, यानी किस चीज़ का सिवाय, सिवाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस. ओके, 19 MCQs है हमारे पास. The stage in which a child begins to think logically about objects and events is called. सेंसरी मोटर स्टेज ये भी नहीं है. ओके, जिसमें चाइल्ड जो है लॉजिकली थिंक सोचता है. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं है, तो राइट आंसर नहीं है हमारे पास, दैट इज नन ऑफ दीज. Learning can be enriched if situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. A student of 5th grade with visual deficiency should be treated normally in the classroom and provided support through audio CDs. Dash identified the 4 distinct stages of children's intellectual development. Piaget identified the 4 distinct stages of children's intellectual development. Education of children with special needs should be provided. Education of children with special needs should be provided along with the normal children. A girl does not talk much at home but talks a lot at school. It shows that ये चीज़ ये क्या जाहिर करती है? It shows that her thoughts get acknowledged at school. A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him or her in a similar situation as in the past. This is related to law of effect of learning. In dash, children become active members of their peer group. In adolescence, children become active members of their peer group. Dash is not a sign of being gifted. Fighting with others is not a sign of being gifted. Dash is related to the objective that a teacher should make an attempt to understand the potentialities of students. That is, educational psychology is related to the objective that a teacher should make an attempt to understand the potentialities of students. Motivation in the process of learning. Motivation in the process of learning creates interest for learning among young learners. In an experiment to find out if taking ginseng increases IQ scores, the IQ scores would be an extraneous variable. A major strength of ecological theory is its framework for explaining environmental influences on development. All of the following advanced principles of child development that are closely allied to the stimulus response learning theory except Gessel. The process whereby the genetic factors limit an individual's responsiveness to the environment is known as range of reaction. In order to develop the spirit of labor in students, students should be given opportunities to do labor from time to time. A child belonging to a backward family has been admitted to your school from the cultural viewpoint. You will keep him in a normal class but will make special arrangements for teaching him, keeping his special needs in view. All of the following can be signs that a child is gifted except uneasy relationships with peers. Okay, I think so it's clear to all of you. आज के लिए इतना ही. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.